Hello everyone. So in the last video we have discussed about exercise 1 of the chapter lines and angles. Okay, theorem we have already discussed, first theorem. So in this video what we are going to discuss, actually some students were asking me that please solve the example number 2, so I am going to solve it for you. Okay, see what we are given in this example. We are given with a figure, okay, like this is the figure we are given with P, Q, then like this we are given with R, then this is T, and one more ray is there, S, okay, and this is the point O. These are the things we are given with. Okay, this angle and this angle are equal, and this angle and this angle are equal. Okay, that means what? Ray OS stands on a line POQ. POQ is a line. It is a given statement. POQ, it's a line. And ray OS stand on it. OR and OT are the bisector. OR, OT, these are the bisector. That's why this angle 1 and this angle 2 is equal. This angle 3 and this angle 4 is equal. Okay, because bisector, you all know that if bisector is there, that means the 1 and 2 are equal, 3 and 4 are equal. Okay, so if angle POS, it is asking if angle if angle POS, you can see this one, if angle POS, it is saying that if this angle means combine angle 1 and 2, I'll write it as given statement. I'll write it as given angle POS equals to X, and it is saying that to find angle ROT we have to find. You can check ROT, this angle we need to find, ROT. You can check it here. Okay, please try to watch it very clearly. See now, proof. Just remember one thing, don't go over what is given, and see all the things you are given in the figure. Just मैं बार बार यही कहता हूँ, go inside the figure. Go inside the figure and observe everything. You can check POQ is a line. POQ is a line. So over a line, the sum of all angles, you all know how much it is? 180. Okay, that means angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4. The sum of all these angles, you can see 1, 2, 3, 4. Angle 1, 2, 3, 4. The sum of all these angles is how much? It is 180. Why? Why 180? You will say, sir, it is a straight angle. A straight angle. You can clearly see it is a straight angle. So 1, 2, 3, 4. The sum of all the angles is 180 degree. Now angle 1 and angle 2 are given equal. Angle 1 given equal to angle 2. It is given. And angle 3 equals to angle 4. These are given. Why? Why these are given? Because this OR and this OT are what? Bisector. OR and OT are bisector. So angle 1 and angle 2 are equal, angle 3 and angle 4. So in place of angle 1, I will write angle 2. Here in this equation, you can see this is the equation we are having. So in place of angle 1, I can write angle 2. So angle 2 plus angle 2. In place of angle 4, I will write angle 3. In place of angle 4, I will write angle 3. So angle 3 plus angle 3 equals to 180. So angle 2 plus angle 2. Angle 2 plus angle 2. 2 angle 2. Angle 3 plus angle 3. How much? 2 angle 3. Then equals to 180. Take 2 as common. So angle 2 plus angle 3 will be equals to 180. Now cancel it out. 2 1 ja, 2 9 ja, 0. That means angle 2 plus angle 3, how much you are getting? 90 degree. That is the answer. Now check ना, angle 2 और angle 3 मिलके कौन सा angle बना रहे हैं? Check in your question, angle 2, angle 3. Which angle they are making? ROT. Angle 2, angle 3. ROT. Okay. सी यही तो फाइंड आउट करना था ROT. तो एंगल 2 और एंगल 3 मिलके ही तो बना रहे हैं. देयरफॉर एंगल ROT इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया.
दिस इज़ द सॉल्यूशन एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. इस तरह से सॉल्व भी करना है. इज इट क्लियर? Okay, someone is asking about example 3 also, so I will solve that one also. Example number 3. Okay, example number 3. So what is given in the example is, see, you are given with 4 ray originating from the same point OP, OQ, OR and OS. These are the 4 rays originating from the same point you are given with, and what you need to find. What you need to find is angle POQ plus angle QOR. You can check angle POQ. This one is angle POQ. This one is angle QOR. This one is angle QOR plus angle ROS. SOR, angle SOR, this one angle SOR plus angle SOP. You can see POS, this angle POS equals to 360 degree. This we need to prove. ये हमें prove करना है. This we need to prove. Now you will say, sir, on a point the sum of all angles is 360 degree. एक पॉइंट के ऊपर सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होते हैं. यू विल से लाइक दिस, है ना, कि एक पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होते हैं. बट हाउ टू प्रूव, कैसे प्रूव करेंगे? दिस इज व्हाट वी नीड ना, वी नीड टू प्रूव. सो वी आर डूइंग सम कंस्ट्रक्शन. आई एम डूइंग अ लिटिल कंस्ट्रक्शन इन इट. एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूँगा मैं इसमें. आई विल एक्सटेंड दिस QO टू पॉइंट M. I am extending this QO to point M. मैंने QO को एक्सटेंड कर दिया एक पॉइंट M तक. एक्सटेंड QO to M. Now you can check this MOQ. This MOQ is a straight line. ये एक straight line है अब MOQ. And on the straight line angle 1 plus angle 2 is how much? 180. I'll write in proof. Proof में लिखूँगा मैं. Now MOQ is a line, na? MOQ is a line. You can see in your figure, MOQ is a line. So angle 1 plus angle 2. Angle 1 plus angle 2 equals to 180. Linear pair, first equation. Then angle 3, 4, 5. Angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is also 180. But this time straight angle. Straight angle. Second equation, add these equation, first and second. Adding first and second, first और second equation को ऐड करते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू, देखो ये सारे ऐड हो गए. लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साइड में ऐड हो गए. देख लो लेफ्ट हैंड साइड वाले सब एक साइड ऐड हो गए. देन 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360. नाउ ट्राई टू चेक. एंगल 2 जो है ना, एंगल 2 ये तो पूरा POQ था. एंगल 2 POQ, तो मैं एंगल 2 की जगह लिख देता हूँ एंगल POQ. प्लस एंगल 3 क्या था? QOR. एंगल 3 क्या था? QOR. तो मैं एंगल 3 की जगह QOR लिख देता हूँ. प्लस एंगल 4 क्या था? ROS. तो एंगल 4 की जगह ROS लिख देता हूँ. प्लस अब एंगल 1 और 5 मिलके देख लो क्या बना रहे हैं. एंगल 1 और 5 मिलके POS बना रहे हैं. एंगल POS इक्वल्स टू 360. देख लो यही प्रूव करना था. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. बस यही तो प्रूव करना था. ट्राई टू वॉच द वीडियो ऑन रिपीटेड मोड. दोबारा उसको देखने की कोशिश करो. जो भी चीज़ें हैं, कैसे एक्सटेंड किया, क्या किया है, व्हाट वी हैव डन. ओके, सो ट्राई टू वॉच इट ऑन रिपीटेड मोड एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. फिर खुद से भी सॉल्व करके ट्राई करना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार देख लिया, ठीक है सर आ गया समझ. ओके, बट ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, इफ़ यू विल ट्राई टू सॉल्व ना, देन इट विल वर्क फॉर यू. देन इट विल श्योरली वर्क फॉर यू. Okay, so this is the thing. Okay, we'll discuss another theorem in next video.